अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं लिटरेरी मूवमेंट्स पे। ये वो मूवमेंट्स हैं जो कि बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तब से लेके अब तक मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ सोशल और पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस के अंदर चलती रही हैं। बहुत सारी नई टर्म्स भी डेवलप हुई, बहुत सारे नए लोग सामने आए, बहुत सारे इंसिडेंट्स ने बहुत सारी नई मूवमेंट्स को जन्म दिया। तो चलें देखते हैं ये लिटरेरी मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं। Literary movements are a way to divide literature into categories of similar philosophical, topical, or aesthetic features as opposed to divisions by genre or period. Like other categorizations, literary movements provide language for comparing and discussing literary works. तो ये वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि किसी ख़ास टॉपिक पे, किसी फ़िलोसॉफ़िकल सोच पे, किसी ख़ास एस्थेटिक फ़ीचर को लेके चलते हैं इकट्ठे और इस पे मजमूई तौर पे काम करते हैं। Now, first thing is the Middle English period. So this is a transition between Anglo-Saxon and modern English. The cultural upheaval that followed the Norman conquest of England in 1066 saw a flowering of secular literature, including ballads, chivalric romances, allegorical poems, and a variety of religious plays. Chaucer's The Canterbury Tales is the most celebrated work of this period. So this is a time when Old English period was changing into the Middle English period, and here we can see a change in English language spellings and pronunciation as well. So if we talk about Canterbury Tales, we can get to know that the pronunciation of Canterbury Tales as compared to today is much different. So here is the beginning line. Here are the beginning lines of prologue to the Canterbury Tales. They were spoken in Middle English in this way. One that April with his surest satire, the drocht of March as perse till rota, and batted every vein in such lacue, of which virtue engendered is the flu. When Zephyr with his sweater broth has inspired hath in every halt and head, tendre Cropus and the youngest son, hath in the ram his harp course erunne, and small folly maken melodia, that slopen all the near with open ear. So pricketh him Nakhur in her courages, then longen the folk to goon on pilgrimages, and palmers for to saken, strondes, to fun have a couth and sundry laundes, and spicely from every shears ende of England to Canterbury they wende. The holy blissful martyr for to sake, that him hath holpen, when that they were seeke. So this was old Middle English period, which is very different from the contemporary English and the spoken and the accent of today's English if you compare it to the Middle English period. Elizabethan period is a flourishing period in English literature, particularly drama, that coincided with the reign of Queen Elizabeth, and it had finest writers such as Ben Jonson, Christopher Marlowe, William Shakespeare, Sidney Spencer. So all these came from Elizabethan era, which is also called the Shakespearean age, which is also known as the Renaissance age. Then comes metaphysical poets. So this movement was a group of 17th century poets who combined direct language with ingenious images, paradoxes, and conceits. John Donne and Andrew Marvell are the best known poets of this school. So metaphysical poets ये वो movement थी जिसमें फॉर फेच्ड इमेजरी यूज़ की, नॉलेज का डिस्प्ले यूज़ किया, लव एंड डिवाइन पोइट्री उसको इन्होंने लिखा और कंसीट्स यूज़ की. कंसीट्स ऐसे मेटाफर्स होते हैं एक्सटेंडेड लेवल के जिसमें आप यानी जो मेटाफिजिकल पोइट्स ने किया कि दो अनकॉमन चीज़ों को आपस में लिंक किया, जिससे वो कंपास जो कि एक मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है उसे लव के साथ लिंक करता है. सो इन दिस वे या सेवन स्लीपर्स जो कि एक रिलीजियस इमेज है उसे लव के साथ मिक्स करता है. सो दीज आर कंसीट्स विच वर यूज्ड बाय metaphysical poets, and John Donne and Andrew Marvell ये इसके
prominent writers, poets थे. The Cavalier Poets. So these were poets from 17th century, and they supported King Charles I during the English Civil War. तो इस सिविल वॉर में कई लोग चार्ल्स वन के अगेंस्ट थे और कुछ इसके सपोर्ट में थे. तो इसमें आम लोगों के साथ साथ जो लिटरेरी पीपल थे वो भी डिवाइडेड थे. लाइक जॉन मिल्टन वाज अगेंस्ट चार्ल्स वन, बट दिस कैवलियर पोइट्स they were with Charles I, and they supported him basically. So इनमें जो फेमस थे इसमें थॉमस कैरियो, रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हेरिक एंड जॉन सकलिंग. So these were the followers or the lovers of Charles I. They supported him. Or these poets opposed metaphysical poetry such as that of John Donne. और इनका जो राइटिंग स्टाइल था इट वॉज अनलाइक जॉन डन स्टाइल. ये उसको और उसकी पोइट्री को नापसंद करते थे. Enlightenment was an intellectual movement in France and other parts of Europe that emphasized the importance of reason, progress, and liberty. The Enlightenment, sometimes called the Age of Reason, is primarily associated with non-fiction writing such as essay and philosophical treatise. Major Enlightenment writers include Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, and Descartes. So these people were writing their essays in a philosophical form, जिसमें से हॉब की लेवियाथन, लॉक की लिबर्टी के ऊपर जो काम था. So these people were writing about such issues which were prevalent in those days, क्योंकि ये एनलाइटनमेंट का टाइम था, एज ऑफ रीज़न का टाइम था. लोग लॉजिकल हो रहे थे और रीजनिंग को यूज़ कर रहे थे, उस लॉजिक को यूज़ करके अपने वर्क्स के अंदर ऐड कर रहे थे. सो दीज पीपल वर नॉट राइटिंग अबाउट रोमांटिक अफेयर्स और महबूबा का चले जाना या दिल का टूट जाना. दे वर टॉकिंग अबाउट सम सीरियस इश्यूज़ which were related to public welfare, what kind of society it should be where the people are living, इसको कैसे बेहतर बनाना है, कैसे अपने हकूक़ लेने हैं, किस तरह आज़ादी हासिल करनी है. So these people were writing about such somber, sophisticated and serene kind of issues. Then comes Neoclassicism. So it was a literary movement inspired by the rediscovery of classical works of ancient Greece and Rome that emphasized balance, restraint, and order. Neoclassicism roughly coincided with the Enlightenment, which espoused reason over passion. Notable neoclassical writers include Edmund Burke, John Dryden, Samuel Johnson, Alexander Pope, and Jonathan Swift. So these people were the lovers of Greek and Roman literature, और इसमें रीडिस्कवरी हो रही थी इन वर्क्स की जिसको मुख्तलिफ फॉर्म्स में लिखा जा रहा था, ईदर बाय ट्रांसलेशंस, और इनको यूज़ किया जा रहा था एज एन एग्जाम्पल और एज एल्यूजन इन सम वर्क्स. तो इन लोगों ने भी एज ऑफ एनलाइटनमेंट की तरह बेसिकली ये ओवरलैपिंग है दोनों एजेस. सो इसमें इन लोगों ने पैशन को नीचे रखा, रीज़न को इन्होंने फोकस दिया कि रीज़न इज सुप्रीम थिंग. सो पोप, जॉनसन, ड्राइडन, स्विफ्ट ये इस एज के, इस टाइम के मेन लोग. Then comes Gothic fiction. So a genre of late 18th century that featured brooding, mysterious settings and plots and set the stage for what we now call horror stories. Horace Walpole's Castle of Otranto, set inside a medieval castle, which was first major Gothic novel. Later, the term Gothic grew into include work that attempted to create an atmosphere of terror or the unknown, such as Edgar Allan Poe's short stories or Mary Shelley's Frankenstein. So these were the novels which were horror in nature, like Dracula. So ये horror stories थी, एक collection थी mysterious elements की, horror circumstances की, जिनको predominantly Gothic novel या Gothic fiction के नाम से जाना जाता है. Sturm and Drang, which is a German word, which is used for storm and stress.
So this brief German literary movement advocated passionate individuality in the face of neoclassical rationalism and restraint. Goethe's The Sorrow of Young Werther is the most enduring work of this movement, which greatly influenced the Romantic movement. So this is pre-Romantic work, Romantic period, which was predominantly in Germany. So ये वहाँ की एक literary movement थी जिसने जो individuality थी neoclassical rationalism में और restraint में इसको follow किया. Goethe was the prominent writer from it. Lake Poets. So, a group of romantic poets from English Lake District who wrote about nature and the sublime. William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Robert Southey were included in Lake Poets, whereas Dorothy Wordsworth was their helping partner. So, these people are predominantly known as the Lake Poets. And Romanticism, which is linked with these Lake Poets, a literary and artistic movement that reacted against the restraint and universalism of Enlightenment. So ये Enlightenment, Classicism या Neoclassicism इसके against एक revolt के तौर पे ये movement आई. The Romantics celebrated spontaneity, imagination, subjectivity and purity of nature. Notable English Romantic writers include Jane Austen in novels, William Blake, Lord Byron, Coleridge, Keats, Shelley, Wordsworth in poetry. Prominent figures in American Romantic movement, which is also called Dark Romantic movement, include Nathaniel Hawthorne, Alan Poe, Brand, John Greenleaf. So these are famous from American Romantic period. So ये जो रोमांटिक पीरियड था ये एक तरह से एक रिवॉल्ट थी उस एज ऑफ रीजन की तरफ एंड इट ब्रॉट मैन बैक टुवर्ड्स पैशन ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स सर्टेन थिंग टुवर्ड्स नेचर टुवर्ड्स ब्यूटी टुवर्ड्स revolution, towards the spontaneity, imagination, creativity, escapism. So ये एक कमाल मूवमेंट थी जिसके अंदर बेशुमार ऐसे नाम हैं कीट्स, शेली, बायरन, ब्राउनिंग जो कि इस एज के लाइक स्टार्स हैं. सो इट स्टार्ट्स विद बेसिकली और चीफली कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स जो उन्होंने मिल के लिखे और यहाँ से इस मूवमेंट का आगाज़ हुआ जिसमें दो तरह के इसमें यानी एक फर्स्ट कैटेगरी थी जो कि लेक पोइट्स हैं और बाद में आने वाले वो हैं जिनमें जॉन कीट्स, शेली, ब्राउनिंग ये सारे उसका पार्ट हैं. Realism, a loose term that can refer to any work that aims at honest portrayal over sensationalism, exaggeration, or melodrama. Technically, realism refers to a late 19th century literary movement, principally French, English, and American, that aimed at accurate, detailed portrayal of ordinary contemporary life. Many of the 19th century greatest novelists, such as Balzac, Charles Dickens, Eliot, Tolstoy, so they are classified as realists. So naturalism can be seen as an intensification of realism. So naturalism एक और चीज़ है जो कि realism की एक intense form है. So ये वो चीज़ है जिसके अंदर वो sensationalism, exaggeration, melodrama इसको थोड़ा सा साइड पे रख के प्रिंसिपली दे फोकस्ड ऑन द ऑर्डिनरी कंटेम्प्रेरी लाइफ के इंसान के रियल लाइफ में क्या हो रहा है. सो उन रियलिस्टिक उन इंसिडेंट्स को इन्होंने अपने फिक्शन का हिस्सा बनाया. डिकन्स और एलियट ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं टॉल्स्टॉय इस एज के जिन्होंने रियलिस्टों को लिखा. Transcendentalism. So, an American philosophical and spiritual movement based in New England that focused on primacy of the individual conscience and rejected materialism in favor of closer communication with nature. So, Ralph Waldo Emerson's Self-Reliance was the famous work from it. So, in this philosophical movement, a core belief was developed which focused on inherent goodness of people and nature, यानी इंसान की जो एक इनबॉर्न जो गुडनेस है और स्पेशली जो नेचर है उसके ऊपर तवज्जो दी गई जो कि पहले नहीं थी.
इमर्सन का अपना ऐसे नेचर, इट वाज वेरी फेमस. एंड देन सोसाइटी जो है, लाइक सोसाइटी और उसके इंस्टीट्यूशन, उनकी जो करप्शन थी और उसका जो ह्यूमन प्योरिटी के ऊपर असर हुआ, जो कि उसने इंसान को भी, यानी सोसाइटी ने या सोसाइटी के इंस्टीट्यूट्स ने जो इंसान को भी करप्ट किया, इसने उस बारे में लिखा. पीपल आर एट देयर बेस्ट व्हेन ट्रूली सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट. सो ये बेसिकली इनका मोटिव था कि इंसान जब सेल्फ रिलायंस उसके पास होगा, इंडिपेंडेंट होगा, तो इंसान बहुत अच्छी तरह बिहेव कर सकता है. So basically, it emphasizes subjective institution over objective empiricism. Adherents believe that individuals are capable of generating completely original insights with little attention and deference to the past matters. Aestheticism. So, a late 19th century movement that believed in arts as end in itself. Aesthetics such as Oscar Wilde and Walter Pater rejected the view that art has to possess a higher moral or political value and believed instead in art for art's sake. कि आर्ट को आर्ट के लिए ही पढ़ना चाहिए, आर्ट का कोई फर्दर मोटिव कनेक्ट नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल वैल्यू के साथ, मॉरल वैल्यू के साथ. आर्ट के अंदर अपना एक चार्म है, तो इस मूवमेंट को एस्थेटिसिज्म कहा गया. Pre-Raphaelites. So, the literary and artistic movement drew inspiration from Italian artists working before Raphael, who was a painter. The Pre-Raphaelites combined sensuousness and religiosity through archaic poetic forms and medieval settings. William Morris, Christina Rossetti, Dante Gabriel Rossetti, brother, and Charles Swinburne were leading poets in the movement, and all of them were poets inspired by Italian Renaissance and Italian painters. So these were painters as well as poets. Naturalism, a literary movement that used detailed realism to suggest that social conditions, hereditary, and environment had inescapable force in shaping human character. Leading writers in this movement include Emily Zola, Theodore Dreiser, and Stephen Crane. So, जिस तरह हमने पहले रियलिज्म में सुना पढ़ा कि उसकी एक एक्सटेंडेड और इंटेंस फॉर्म जो है वो नेचुरलिज्म है. तो ये जो लोग थे, ये यानी बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक थे, बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि जो सोशल कंडीशन है, ये सारी चीज़ें और जो फेट है, ये इंसान की लाइफ को रीशेप करने में बड़ा किरदार अदा करती है. सो वट एवर इज़ हैपनिंग दैट शुड बी डिपिक्टेड. Symbolists, a group of French poets who reacted against realism with the poetry of suggestion based on private symbols and experimented with a new poetic form such as free verse and the prose poem. The symbolists Stephane Mallarmé, Arthur Rimbaud, and Paul Verlaine are the most well-known, were influenced by Charles Baudelaire. In turn, they had a similar influence on the modernist poetry of the early 20th century. So these people were against the realism and of course naturalism, और इन्होंने अपने प्राइवेट सिंबल्स बनाए, लाइक ब्लैक के सिंबल्स थे, इसी तरह इनके भी अपने सिंबल्स थे जो इन्होंने ईजाद किए. नई पोइटिक फॉर्म बनाई जिसमें फ्री वर्ड्स को ये इन्होंने लिखना शुरू किया, एंड प्रोज पोएम यानी अ मिक्सचर ऑफ प्रोज एंड पोइट्री, इसको इन्होंने यूज़ किया. एंड जो मॉडर्निस्ट पोइट्री है अर्ली 20th सेंचुरी की, इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लिया सिंबलिस्ट से. Modernism. So, a literary and artistic movement that provided a radical breaks with traditional modes of Western arts, thought, religion, social conventions, and morality. Major themes of this period include the attack on notions of hierarchy, experimentations in new forms of narrative such as stream of consciousness, doubt about the existence of knowable objective reality, attention to alternative viewpoints and modes of thinking,
self-referentiality as the means of drawing attention to the relationship between artist and audience in form of content. So this not only include one theme, but also so many themes are included within. It talks about notions of hierarchy. उसके अलावा इसमें stream of consciousness जो कि itself एक नई एक movement थी by जेम्स जॉयस, जेम्स और वर्जीनिया वुल्फ जिन्होंने इसके ऊपर काम किया. सो इसमें ये बेशुमार चीज़ें हैं. सो ये मॉडर्निज्म का जो पीरियड है ये ऑलमोस्ट हमारे आज की एज के करीब करीब है. 1890 से 1940 यानी वर्ल्ड वॉर टू के ख़त्म होने से पहले पहले तक ये पीरियड रहता है. सो इसमें वी कैन गेट टू नो दीज आइडियाज़ जिसमें बेशुमार थीम्स हैं जिनको मैंने मेंशन किया. सो ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल हैं जिसमें थोड़ा सा डाउट है ऑफ एग्जिस्टेंस जिसने और उसके बाद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक नई तरह का राइटिंग स्टाइल था. So these were all in modernism. Dadaism. So it was an avant-garde movement that began in response to the devastation of World War I. So ये पेरिस से स्टार्ट हुई मूवमेंट और इसमें जो राइटर्स थे इन्होंने निहिलिस्टिक और एंटीलॉजिकल पोइट्री, प्रोज और आर्ट को जन्म दिया. इन्होंने ट्रेडिशनल रूल्स और आइडियाज़ जो आइडियल्स थे प्री वॉर यूरोप के उन सब को फरामोश किया और बड़ी निहिलिस्टिक एक यानी एक पेसिमिस्टिक काइंड ऑफ पोइट्री लिखी दैट शोड दैट देयर इज़ नो मीनिंग लेफ्ट टू लिव इन लाइफ. ये इंसान की जो लाइफ है वो मीनिंगलेस हो चुकी है. सो सच काइंड ऑफ थीम्स वर देयर इन Dadaism. French poets, the most prominent among them were Sassoon, Wilfred Owen, and Rosenberg. As a conclusion on war poetry, we have to say it differs from the poetry which preceded it, namely the Georgian poetry. So, इस इन दोनों के दरमियान डिफरेंस था जॉर्जियन पोइट्री और तरह की सी. ये जो ट्रेंच पोइट्स थे दे वर predominantly some of them were in army and they were writing about war और जंग के इश्यूज़ के ऊपर जो एक जंग का मजमूई थीम बनता है. जिस तरह 65 की वॉर में ऑल टुगेदर इट वाज रिटन अबाउट पैट्रियोटिक पोएम्स. तो इस तरह के उससे अमेरिकन यानी जो वर्ल्ड वॉर थी उस हवाले से इसके जो ये जो सारे पोइट्स थे हु आर आर्मी मैन टू इन्होंने उस वॉर के हवाले से काफ़ी कुछ लिखा. सो दीज पीपल आर कॉल्ड French poets and predominantly movement is called French poetry. Harlem Renaissance. A flowering of African American literature, art, and music during 1920s in New York. It was a time when this movement was developing, and it is also called New Negro Movement, in which depicts about the settlement of people from south to north because it was a massive migration. People were coming from one part of America to another. Backdrop पे racial discrimination थी, racial issues थे, फसादात थे. So इसमें jazz music it became very common. The novel Jazz it is written on the backdrop of Harlem Renaissance. So इसमें it was all about the black literature. जितने भी जो black people थे they were more into it. उनका music, उनके art, उनका literature, उनका सारी यानी जो लाइफ थी, उनकी struggle, उनके जो sufferings उन्होंने की वो इस यानी यहाँ पे हमारे सामने आई. It is called revival or renaissance in a way that it brought to us or brought to the public the literature, art, culture of those black people जिसका एक तरह से revival हो रहा था. The lost generation, a term used to describe the generation of writers, many of them soldiers that came to maturity during World War I. Notable members of this group include Scott, John Passer's Ernest Hemingway, whose novel The Sun Also Rises embodies the lost generation's sense of disillusionment.
सो ये लोग राइटर्स भी थे और वॉरियर्स भी थे, इन्होंने जंग भी लड़ी. सो दीज वर सोल्जर्स, कुछ इसमें से यानी वॉलंटियर सोल्जर्स थे, कुछ वाकई सोल्जर्स थे. सो उन लोगों ने जो जंग में हालात देखे और उसके बाद उन्हें पता लगा कि शायद इस जंग से बच के निकलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, या वो बच गए तो जंग ने इतना बुरा असर उनकी लाइफ पे छोड़ा कि वो किसी भी लम्हे उस जंग की होलनाकी को भूल ना पाए. सो इस ग्रुप को लॉस्ट जनरेशन कहा गया. द टर्म वाज कॉइन्ड बाय गर्ट्रूड स्टेन, जिसको हेमिंगवे ने अपने सन ऑल्सो राइजेस नॉवल में यूज किया. Surrealism, an avant-garde movement based primarily in France that sought to break down the boundaries between rational and irrational, conscious and unconscious, through a variety of literary and artistic experiments. The Surrealist poets such as Andrew Breton and Paul Allard were not as successful as their artist counterparts, who include Salvador Miro and René Magritte. So these were called the Surrealist poets. Now, in this movement, what we see is कि rationalism और irrationalism या conscious और unconscious, इनकी boundaries ख़त्म कर दी गई. So it was a movement in art and literature which sought to release the creative potential of the unconscious mind. For example, by irrational juxtaposition of images, कि इंसान का जो एक unconscious mind है उसका creative potential वो इन लोगों ने इसमें दिखाया अपने works के अंदर. Magic realism. So it was a style of writing popularized by George Louis Borges, Gabriel Marquez and Grass, and some other writers, that combines realism with the movement of dreamlike fantasy within a single prose narrative. कि जिसमें रियलिज्म है लेकिन उसमें ड्रीम लाइक फैंटेसी भी है. सो दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मैजिकल वर्ड एंड रियलिज्म, कि जिसमें रियलिस्टिक फॉर्म में ड्रीम लाइक फैंटेसी दैट वी फाइंड इन सर्टेन मूवीज़ नाउ. अक्सर मूवीज़ में इसका कॉन्सेप्ट आ रहा है, लाइक वी सी इन मैट्रिक्स, जिसमें एक इंसान सोता है तो अपने माइंड को यूज़ करते हुए कहीं से कहीं पहुंच जाता है. सो सच जो कॉन्सेप्ट्स दे कम फ्रॉम मैजिक रियलिज्म. Postcolonial literature, so literature by and about the people from former European colonies, principally in Africa, Asia, South America, and Caribbean. This literature aims both to expand traditional canon of Western literature and to challenge Eurocentric assumptions about literature, especially through examination of questions of others, identity, and race. Prominent post-colonial works include Chinua Achebe's Things Fall Apart and V.S. Naipaul's A House for Mrs. Beavers, and Edward Said's Orientalism. So, Orientalism provided an important theoretical basis for understanding post-colonial literature. सो इसमें बताया गया उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इन एरिया से ताल्लुक़ रखते थे. उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताए, उन्होंने अपनी आंखों देखी सूरत हाल बताई, जिसमें जिस तरह एचबी ने बताया कि थिंग्स फॉल अपार्ट, व्हाट हैपन्स टू दोज पीपल लिविंग इन अफ्रीका, या ओरिएंटलिज्म में भी इस तरह कल्चर के ऊपर दिखाया कि किस तरह पोस्ट कॉलोनियल जो असरात हैं उनके ऊपर मौजूद हैं. Imagism, it was a poetry based on description rather than theme, and on the motto, the natural object is always the advocate symbol. Ezra Pound and Richard Aldington, they were famous people from this movement. So it was 20th century movement, basically Anglo-American poetry, that favored precision of imagery and clear, sharp language. It has been described that the most influential movement, like this Imagism, is known as the most influential movement in English poetry since pre-Raphaelite. So after them, सबसे ज़्यादा मशहूर ये वाली हुई. So as a poetic style, it gave modernism. It starts in the early 20th century and is considered to be the first organized modernist literary movement in English language. It is sometimes viewed as a succession of creative movements rather than a continuation
or sustained period of development. Postmodernism, so it is a notoriously ambiguous term, especially as it refers to literature. Postmodernism can be seen as a response to the elitism of high modernism as well as to the horrors of World War II. Postmodernism literature is characterized by disjointed, fragmented pastiche of a high and low culture that reflects the absence of tradition and structure in the world driven by technology and consumerism. Out of them, Toni Morrison happens to be a strong proponent of the age. So it is a movement that developed in the mid to late 20th century across philosophy, arts, architecture, criticism, marking a departure from modernism. So the term has been more generally applied to describe a historical era set to follow after modernity and the tendencies of this era. So, this is generally defined by an attitude of skepticism, irony, or rejection toward what it describes as grand narratives and ideologies associated with the modernism, often criticizing Enlightenment rationality and focusing on the role of ideology in maintaining political or economic power. सो रिलेटेड टू ऑल दोज इश्यूज बेसिकली जो कि आजकल मॉडर्निज्म से लेके अब तक जिनको हम देख रहे हैं उन तमाम इश्यूज से डील किया जाता है इस मूवमेंट के अंदर. The absurd literature. So, a movement primarily in the theatre that responded to the seemingly illogicality and purposelessness of human life in works marked by a lack of clear narrative, understandable psychological motives, or emotional catharsis. Samuel Beckett's Waiting for Godot is one of the most celebrated works in the theatre of absurd, जिसमें ये वो मूवमेंट है जिसके अंदर ऐसे प्लेज लिखे गए, ऐसे वर्क्स लिखे गए जिसमें हम देखते हैं कि बिल्कुल चेंज किस्म की सेटिंग है. वो सेटिंग जो कि ह्यूमन लाइफ के करीब की दिखाई गई कि लाइफ के अंदर मोनोटनस है, चेंज जो है वो नहीं आ रही, उसके अंदर रेपिटिशन है और उसके अंदर वेट है. तो ये सारी चीज़ें इसकी इस थिएटर का हिस्सा है. वेटिंग फॉर गोडो बाय बेकेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ theater of absurd. Angry Young Men. So, a group of male British writers who created visceral plays and fiction at odds with the political establishment and a self-satisfied middle class. John Osborne's play Look Back in Anger is one of the seminal works of this movement. So, यहाँ पे जो विसरल वर्क्स होते हैं वो ये होते हैं कि जिसमें इंटेलेक्ट से ज़्यादा इनर फीलिंग्स, इनर थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है. सो दीज पीपल वर वर्किंग ऑन सच इश्यूज़ और ये इनको एंग्री यंग मैन इसलिए कहा जाता था. सो दे वर काइंड ऑफ वेरी सीरियस पीपल एंड लाइक वेरी सीरीन, सोम्बा एंड बिल्कुल अपने काम से काम रखने वाले. एंड द वर्क्स वर फोकस्ड विद द इनर फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन. वो इंटेलेक्ट से ज़्यादा फीलिंग्स यानी जज्बात के ऊपर डील करते थे. Expressionism. So, part of the larger expressionist movement, literary and theatrical expressionism is an avant-garde movement originating in Germany, which rejects realism in order to depict emotions and subjective thoughts. Franz Kafka, Alfred Doblin, Heinrich Mann, Oscar Kokoschka. So, these people belong to expressionism जिनके लिए जो realism था it was of no value, they rejected it. और इनके लिए जो चीज़ ज़्यादा important थी that was emotions and subjectivity और उनकी अपनी subjective thoughts. So Kafka happens to be the most famous among the expressionist writers. So friends, these were the chief literary movements which played an important role and they can help you in your different examinations, in your interviews. So don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon for your latest updates that you can keep getting from my channel. Thank you very much. Allah Hafiz.